Admitted, so all. Right. So good evening, everyone. We welcome you here to another session, and we will be discussing the subsequent two chapters, which will be covered in term 2 of the CBSE exams, which are just around the corner now. We will be taking up cash flow statement and debentures. So we have received many queries over email and messages, which we will be taking up. And you are most welcome to type in your queries as well on the chat box. Please type it and send it to the participant GS Grewal. It would be appearing as host or co-host. Kindly send it to that participant and we'll be able to receive it right here. So before we begin, we know we are listening to a lot of information and news about syllabus and the new chapters or whatever is going to be deleted or all those things. A lot of rumors are doing rounds. So I would like to pass the speaking table to CA Dr. GS Grewal so that he can express his views on this to clear the air to some extent. Thank you. Thank you, Rima. Yes, Rima is very right. A lot of rumors are going around that few chapters are being deleted and things like that, both in class 11 and class 12. But my view is that do not believe the rumors unless until the syllabus comes on the CBSE website. We should not be going by what's happening around, what is rumored around. But we just cannot ignore the rumors as well. The rumor that NPO is being deleted, which I cannot say whether it is a correct news or not, but only thing I can suggest is that in this case, we should start with the chapters on partnership rather than touching the NPO first. It can always wait till the time syllabus comes out. Syllabus normally comes out on the 30th or 31st of March every year. But today we are on the 4th of April. The syllabus hasn't been notified yet. So maybe there are some glitches. Let us, I think my suggestion would be, let us wait and not go by the rumors. But yes, to be on safer side, to utilize the time perfectly, we should start with partnership accounts and later on, if NPO remains, we can teach that. If it doesn't remain as it is rumored, we can always, it will be, time will be properly saved. Similarly, rumors are going around for chapters in company accounts. So my suggestion would be to wait for it. And many queries are raised over the telephone. Is there any change likely in the syllabus for the new session? Again, it's a rumor, we can't say that. What is going to happen? Whether there's a change or there is no change. Let the authorities decide it, publish it, and then we can go forward. But my only request would be, don't go by the rumors. Let the syllabus be notified. Thank you, Rima. Thank you. I introduce the panel members here. Shri R.K. Khosla, Shri Harvinder Singh, and we also have Shri Gaurav Balia, who's with us remotely, and they will be taking up all your queries. So we will first begin with debentures, and I'll take up all the queries that we have received. And you can please, I am repeating, you can please send your queries to participant GS Grewal, co-host, appearing as co-host. Please, I will be able to see them here. Thank you. So we begin with the
first question, and I'll pass this question to Harvinder sir. Sir, whether entries for redemption of debentures will be asked along with entries for issue of debentures. It has been asked by Miss Rajni. So would you take that question, sir? Good evening, everyone. As all of you know that according to the syllabus, redemption of debenture is not part of syllabus for the year 21-22. So entries for redemption of debentures will not be asked in the exams. But I would suggest that these entries should be explained to students. Simple entries for redemption of debenture, and the reason behind that is when cash flow statement is discussed in the class, normally we discuss redemption of debentures. Okay, that redemption of debenture is shown as part of financing activities, and when debentures are redeemable at premium, that premium is also considered as repayment of liability. So simple entries for redemption of debentures should be discussed, but from examination point of view, no entries will be asked for redemption of debentures because the topic is only and only issue of debentures. Because the redemption of debentures chapter itself is deleted. That has been related. Yeah. Thank you, sir. So next question is how to treat discount or loss on issue of debentures if securities premium reserve, capital reserve balances are insufficient. So I'll repeat, how to treat discount or loss on issue of shares if securities premium and capital reserve balances are insufficient. So Khosla sir, can you please take this? Yes. Discount or loss on issue of debentures. Discount means the issue price is less than the face value. This is a discount. When debenture are repayable at a premium, that premium is also a loss. Such discount or losses must be written off in the year in which the debentures are issued. Such losses or discount first can be written off from the security premium. Second, if security premium or reserve are not sufficient, second, we can use the capital reserve. It is very clear that capital reserve are those reserve which is created from the capital gains, capital profits. And such reserve can be used for writing of capital loss. So this discount or loss on issue is a part of capital loss, or capital reserve can also be used. Now let it be. If the security premium reserve as well as the capital reserve are not sufficient, the condition is it must be written off. The last option, it can be debited to the statement of profit and loss. So very clear. First, the security premium should be used. Second, reserve. Second, capital reserve. If still there is a balance in discount or loss on issue of debenture, the balance should be adjusted to the statement of profit and loss. Thank you, sir. So our next question is, can we use general reserve also for writing of discount or loss of issue of debentures? So we request Grewal sir to answer this question. What is the meaning of general reserve? First of all, it is a reserve to meet any kind of loss by the company. So certainly, general reserve can be used for writing of discount or loss on issue of debentures. But there's a rider. और rider ये है कि जो एक accepted system है, जो एक accepted practice है, उसी को follow करें. Securities premium reserve से पहले write off या फिर statement of profit and loss. General reserve को unless and until question ना कहे, if the question specifies that discount or loss on issue of debentures is written off from general reserve, then only we should do it. Otherwise, we should follow what the practice is. Because it is not only the question of teaching correct accounting,
but it is also that our students score the best. अब कई लोगों का ये भी क्वेश्चन है, आई एम स्लाइटली डिविएटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट कि मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे क्लास 12 के, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट होगा इस साल से, तो उसकी कितनी रेलेवेंस है? रेलेवेंस तो है, अगर नॉलेज है तो मार्क्स आएंगे। और बेशक से कॉलेजेस की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस हैं उसकी जो एडमिशन है वो बेस्ड होगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस के ऊपर। पर ये भी क्लियर है कि कॉलेजेस को ये राइट दिया जा रहा है कि वो क्लास 12 के भी मिनिमम मार्क्स डिटरमिन करें। उस अगर मिनिमम मार्क्स आए हैं तो ही कंसीडर होगा फॉर द एडमिशन। सो जो हमारा एम है, टीचिंग करेक्ट अकाउंटिंग and also enabling our students to score the maximum. तो जब मैक्सिमम कैसे स्कोर होगा? जब हम एक्सेप्टेड प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे। तो हमें ये अपने स्टूडेंट्स को जरूर बताना चाहिए, आंसर वही करें जो क्वेश्चन में पूछा गया है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, जैसे इस केस में सपोज करो क्वेश्चन कुछ नहीं कहता और जनरल रिजर्व दिया हुआ है, डोंट राइट इट ऑफ फ्रॉम जनरल रिजर्व, राइट इट ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। खोसला जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं ग्रेवाल साहब ने, जैसे कहा कि जो एक परंपरा हमारा सिस्टम चला आ रहा है कि पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज करें सर, उसके पश्चात अगर जरूरत पड़े तो कैपिटल रिजर्व का प्रयोग करें, फिर लास्ट अगर देखा जाता है तो जनरल रिजर्व से भी किया जा सकता है, लेकिन कोशिश यही हो जो एक सिस्टम फॉलो किया जा रहा है पहले सिक्योरिटी। मेरा क्या जनरल रिजर्व से ना करो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सिलेबस को अगर हम देखें तो सिलेबस में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, राइट इट ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इफ इट एग्जिस्ट, कैपिटल रिजर्व इफ इट एग्जिस्ट, एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और इसका एक पॉइंट साथ में ये भी है कि यहाँ पर हम ये बात तो कह देते हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज नॉट एडिक्वेट then capital reserve, and if that is also not adequate then from statement of P&L. अब यहाँ पर हमारे सामने ये क्वेश्चन तो कभी नहीं आएगा कि amount of statement of P&L is not adequate, because this writing off is considered as charge on profits. Yes. So irrespective of the balance in statement of P&L, it can be charged from statement of P&L. यानी सर बात एक ही है कि जो डिस्काउंट या लॉस का जो है लास्ट में है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और जनरल रिजर्व तो अपवादजनक एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है। Thank you. So next question we'll be asking Gaurav sir. So if entries for issue of debentures at discount are not specifically asked to be passed, entries for writing off discount are to be passed or not? And a related question is that if no information is given, which account is to be used to write off the discount or loss on issue of debentures? This has been asked by Mr. Alok. So, sir, would you please take this up? Yes. Good evening, all of you. Alok, sir, there are 2 points. There are 2 queries you have discussed, you have asked. First is, if only the entries for issue of debenture have been asked. The question is specifying for entries for issue of debentures, then there is no need to pass the entry for writing of discount. It means you just have to pass the entries for debentures to be issued. Second aspect, if the question is specifying for past necessary entries or past entries for the year, let us suppose the issue was on 1st April 2021. So past entries for the year 2021 to 2022, 21-22. Then my humble submission is, yes, you have to pass the entry for writing of discount. And in that scenario, you have to pass the entries for interest on debenture also. If the question is specifying only for past necessary entries, then again, to be on the safer side, past entries for issue of debentures as well as writing of discount or loss on issue of debentures. It means the language of the question is very important. If question is clearly saying past entries for issue, only for issue, past necessary entries, then entry for issue, as well as entry for writing of discount or loss, whatever the case it is. And third, if past entries for the year
then you have to pass the entries for interest on debenture also. The second portion is what is the order of writing of discount? It has already been discussed in the previous query. It will be first written off from securities premium reserve, the given balance, as well as if the SPR has been received from the issue of debentures, then capital reserve. And if these two are not sufficient, if the balance of these two are not adequate to write off the discount or loss on issue of debenture, then statement of P&L, where the sufficiency, insufficiency doesn't matter because it is a charge on profits. Thank you. Am I right, Grewal sir? Am I right? Yes, sir. Yes, please. एक में यहाँ ये डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर के ऊपर है, तो बेहतर होगा मेरे ख्याल एक बार वो जर्नल एंट्री कर भी दी जाए तो जरा याद आ जाएगी। तो इसको अब देखिए हम कैसे राइट ऑफ करने जा रहे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट फर्स्ट, और कैपिटल रिजर्व, और लास्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। और इसमें क्वेश्चन का एक पार्ट ये भी था कि व्हेन नथिंग इज स्पेसिफाइड, तो हम ये बात मानकर चलेंगे कि देयर इज नो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, नो कैपिटल रिजर्व, whole amount of discount on issue debenture is to be written off through statement of profit and loss. So this goes without saying. अगर balances नहीं दिए हुए securities premium reserve के, इसका मतलब वो नहीं है। फिर अगर क्वेश्चन में ये आ सकता है कि the debentures were issued at premium, तो जो SPR रिसीव हुआ है that has to be utilized, वो एक पॉइंट है, वो एक एक्सेप्शन केस है for the statement. क्योंकि इसका जो राइट ऑफ की एंट्रीज पास की जाएंगी वो ईयर एंड के ऊपर पास की जाएंगी। हाँ जी, yes. And as on that date, if secure shares were issued at premium, so that means securities premium has a balance. Yes, yes. So that is why it has to be used. Move on to the next question. The next question we will be asking Harvinder sir. So sir, can balance sheet be asked for issue of debentures as a collateral security? Yes, it can be. As all of you know that there are two treatments of issue of debenture as collateral security, by passing a journal entry and without passing a journal entry. In both the cases, a balance sheet can be asked. To that question may be, how will you show issue of debenture as collateral securities in company's balance sheet? So that may be asked. And the simple treatment is the amount of loan will be shown as long-term borrowing. And then if entry has been passed, the entry is debenture suspense account debit to debentures account. It will be mentioned that debenture suspense and subtract debentures less debenture suspense. Net amount will be shown in the outer column because the amount of debentures issued as collateral security, the amount will be same. So that means net result or the amount of net result of long-term borrowing will be the amount of loan, which will be shown in the face of balance sheet. And if no entry has been passed, simply when debentures will be issued, loan will be shown, that will be, it will be mentioned as a footnote that debentures have, these loan has been secured by issue of certain amount of debentures as collateral security. So, In fact, there is a question in the sample paper also this year. For term 2, there is a question about issue of debentures as collateral security and presentation in the balance sheet. यानी अगर हम नटशल में ये कहें जो हरविंदर जी ने कहा है, जो लोन लिया गया है फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर वो बैलेंस शीट के मुखड़े के ऊपर भी है और नीचे भी नोट टू अकाउंट्स के अंदर भी है। लेकिन अगर एंट्री नहीं की जाती है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, ना एंट्री होगी ना बैलेंस शीट के मुखड़े के ऊपर कुछ दिखाया जाएगा। लेकिन अगर एंट्री कर ली जाए, जैसा इन्होंने कहा दूसरी ट्रीटमेंट है, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, वो तो पहले एज इट इज दिखाया जाएगा जो इशू है डिबेंचर का, लोन का, सिक्योर्ड बाय कोलेटरली। नीचे ये एंट्री आपको इनर कॉलम के अंदर नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर इसको कैंसिल करके बाहर फिगर नील के अंदर दिखानी। May I? Yes, yes, Sir, I was just going through the syllabus.
सिलेबस अगर मैं देखूं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, वहां पर दिया है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। उसके बाद आता है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स। उसके सिलेबस के अंदर कहीं नहीं है बैलेंस शीट बननी है या नहीं बननी। इट्स डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट, बट यस, its placement can be asked. Yes. So there I differ slightly, because in the syllabus it is balance sheet, debentures, how it will be shown in the balance sheet is not part of the syllabus, but it can certainly be asked how it will be placed in the balance sheet, under which main head and subhead. Yes. बिल्कुल ठीक है सर। This is हाँ सर, ये बिल्कुल एग्री कर गए। हाँ बिल्कुल एग्री है जी। बैलेंस शीट तो नहीं मांगी है, वो तो बस शेयर लेकिन उसका कैपिटल कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, उसमें लेकिन रिलेटेड है कि रिलेटेड आइटम्स हाउ विल यू डिस्क्लोज Yes. दैट विल बी प्लेस्ड इन द बैलेंस शीट। बिल्कुल। और ये बच्चे को बतानी चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि मुखड़े के ऊपर भी क्या है इसका। नहीं, वो नॉलेज शेयर करनी है, बिल्कुल वो नॉलेज शेयर करनी है, पर क्वेश्चन जो है वो बैलेंस शीट बनाने का नहीं आ सकता। आएगा, सिर्फ आएगा तो वो कहाँ का और कैसे प्लेस होगा, under which head, main head and main subhead. head, yes. So related question we've been asked on collateral security. This is by Mr. Shikhar Gupta. Why do we use debentures suspense account in case of collateral security? Arvinder ji? So Actually, that is a fictitious account which is opened just to complete the journal entry. That depends upon their decision whether they want to show debentures issued as collateral security in the balance sheet or not. If they want to show as notes to accounts, so debentures will be credited because debentures have been issued without receiving anything. And as you know, in accounting, generally we use suspense account just to complete the double entry. So the name has been mentioned as debenture suspense. So that is a fictitious account which will be closed when these debentures will be taken back, loan will be repaid, and debentures will be taken back. So reverse entry, then it will be passed. So that is simply a fictitious account which is open. On the lighter side, Yes, sir. यही suspense है कि वो liability बनेगी या नहीं बनेगी। Yes. लेकिन इस पे ध्यान रहे, इन डिवेंचरों के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट से कई बार पूछा जाता है। मैंने अभी एक वर्कशॉप के अंदर पूछा है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी, ग्रेवल साहब न्यू ईयर स्कूल के अंदर ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर कंपनी डिवेंचर तो इशू करती है लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं पे करती है, वो बताइए कौन सी सिचुएशन। वो वही है when the debenture issued as a collateral security. Okay. Thank you, sir. So, sir, next question is for you only. Maybe. When debentures are issued at a discount and redeemed at premium, why only loss on issue of debentures account is debited? Can we debit discount and loss on issue of debentures separately? मैं इसे थोड़ा पंजाबियों के स्टाइल के नाल समझा दूं पंजाबियों के लिए कि डिबेंचर आर इशूड एट ए डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट ए प्रीमियम। ये डिस्काउंट कैपिटल लॉस है और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी कैपिटल लॉस है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा किसी को शायद लगेगा वो तो डिस्काउंट का जो कैपिटल लॉस है वो तो हो गया, प्रीमियम और रिडम्पशन हालांकि पोर्शन नहीं है मेरा, पता नहीं कंपनी पे करेगी नहीं, ये एक एंटिसिपेटेड है फिर भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। सवाल ये है तो ये लॉस, कहावत वही है खरबूजा चाकू के ऊपर गिरे या चाकू खरबूजे के ऊपर गिरे, आखिर तो खरबूजे को कटना है। तो इसलिए एक तरीका तो ये होता है कि डिस्काउंट का पोर्शन डिस्काउंट के अंदर दिखा दिया जाए, प्रीमियम और रिडम्पशन को अलग से दिखा के डेबिट कर दिया जाए, या इनको कंबाइन भी कर लो। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर गलत, उसके अंदर भी कोई नहीं है, बेसिकली ये है कैपिटल लॉस है। तो उस केस के अंदर दोनों केसेस के अंदर मैं एंट्री बता रहा हूं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, discount on issue of debenture account debit, premium on redemption of debenture, to debenture account, loss on issue of debenture, to debenture account, to premium on redemption of debenture account. लेकिन एक चीज, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी बात बता रहा हूं, कभी ये याद है स्टूडेंट के लिए, डिबेंचर किसी भी हाल के अंदर हो,
किसी तरीके से कंपनी इशू कर दे और किसी भी तरीके से पे कर दे, चाहे डिस्काउंट के ऊपर करते, चाहे पार के ऊपर करते, चाहे प्रीमियम पे करते, ऐसे इशू के ऊपर उसका ऑप्शन है। लेकिन डिवेंचर अकाउंट तो हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर ही रहेगा, फेस वैल्यू से ही खुलता है और फेस वैल्यू के ऊपर ही बंद हो जाता है। तो इसलिए दोनों ट्रीटमेंट ठीक है, गलत कुछ नहीं है। Thank you, sir. And we have taken up all the queries on debentures. So we'll be now moving on to the bigger chunk, which is cash flow statement. So we'll begin with the first question, and we've received many queries on this, and I'll request Grewal sir to take this up. This is about what is the treatment of proposed dividend on equity shares and how to treat it with preference dividend in the same question while preparing cash flow statement. Thank you, Rima. Proposed dividend. What is proposed dividend? It is proposed by the board of directors. Now, let me start from the different kinds of dividend. There are two kinds of dividend: interim dividend and final dividend. Final dividend is often called proposed dividend. Interim dividend, board of directors can declare. That means they can pay the dividend, interim dividend, to the shareholders. But when it comes to the proposed dividend or final dividend, shareholders' approval is necessary. And we all know shareholders' meeting is held after the end of the financial year, for which the dividend is declared, for which the dividend is proposed. So it means last year's proposed dividend will be approved or declared by the shareholders in the current year. And current year's proposed dividend will be declared by the shareholders in the next financial year. So इसका मतलब ये हो गया कि पिछले साल वाला जो proposed dividend है, अगर question silent है, it means पिछले साल वाला proposed dividend इस साल में approve हो गया और वो पे भी हो गया, क्योंकि पेमेंट जो है within 30 days पेमेंट करनी है. तो same year proposed dividend of previous year is considered to have been declared during the year and also paid during the year. और current year का proposed dividend, it is only a contingent liability. Contingent liability इसलिए है क्योंकि shareholders को approve करना है और shareholders के पास एक power है कि proposed dividend या final dividend को वो reduce तो कर सकते हैं, even zero भी कर सकते हैं, पर increase नहीं कर सकते. तो वो contingent हो गया on the approval of the shareholders. अब आता है second part इस question का, कि second part ये है preference dividend को लेके. Law ये कहता है कि अगर equity shareholders को dividend दिया गया है, तो preference shareholders को भी दिया जाएगा. तो अगर equity shares के ऊपर interim dividend दिया है और question silent है, उसके बाद कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब क्योंकि interim dividend दिया गया है equity shares पर, तो preference shares के ऊपर भी dividend देना पड़ेगा. और अगर interim dividend नहीं दिया, suppose, और question में adjustment दिया हुआ है that proposed dividend on equity shares is say 10%, because now the company is going to give dividend on equity shares, it must also give dividend on preference shares. और इसका उल्टा देखें, दिया हो dividend on preference shares, propose किया है कंपनी ने, अब यहाँ पर आके it is not necessary कि हम equity shares के ऊपर भी दें, क्योंकि लॉ ये नहीं कहता कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहे हो तो इक्विटी शेयर होल्डर को भी दो. वो तो ये कहता है इक्विटी शेयर होल्डर को दे रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो. तो ये अब पोजीशन बिल्कुल क्लियर,
दोनों शेयर्स हैं, इक्विटी भी प्रेफरेंस भी। इक्विटी शेयर्स के ऊपर चाहे हमने इंटरिम दिया चाहे हम फाइनल डिविडेंड देने जा रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर भी हम डिविडेंड देंगे। क्वेश्चन साइलेंट भी हो तब भी एडजस्टमेंट होगी, इक्विटी शेयर डिविडेंड की भी और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की भी। और हमेशा याद रखें, दिस इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हम जब कैश फ्लो में स्टार्ट करते हैं, इट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। और क्या करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस इन सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस माइनस ओपनिंग बैलेंस। अब इसमें से क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो क्योंकि डिविडेंड दिया है तो उसमें से ऑलरेडी माइनस है, इसलिए उसको प्लस कर देंगे वहां पर डिविडेंड अमाउंट को, और लेटर ऑन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसको पे कर देंगे। अनपेड डिविडेंड भी हो सकता है, उसका एक सेपरेट क्वेश्चन है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन जब वो क्वेश्चन टेक अप किया जाता है। वैसे ग्रेवाल साहब एक मिनट में, हमारे बड़े एक अनुभवी हैं, हालांकि वो बाद में क्वेश्चन होता, विनोद विज जी का। हाँ, बड़े जाने माने हमारे साथी टीचर, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के बड़े अनुभवी, जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे को बहुत फीडबैक भी देते हैं किताब के बारे में। जो बात ग्रेवाल साहब ने कही है उनका ही एक क्वेश्चन साथ जुड़ा हुआ है, उसको साथ जोड़ते हुए मैं कह रहा हूँ। हालांकि मुझे भी फिर भी थोड़ा प्रपोज डिविडेंड के ऊपर बोलना पड़ेगा, ग्रेवाल साहब काफी बोल चुके हैं तो कहने की जरूरत तो नहीं, लेकिन क्योंकि लिंक मुझे जोड़ना है तो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहली बात, प्रपोज डिविडेंड जो है ये डायरेक्टर प्रपोज करते हैं, इसकी अप्रूवल ईजीएम के अंदर है, जैसे गौर सर ने कही। जब तक ये डिविडेंड अप्रूव नहीं हुआ टिल दैट डेट ये अपना आप एक कंटीजेंट लायबिलिटी है, और ये नीचे दिखाई जा रही है। प्रपोज डिविडेंड के बारे में एक चीज याद रखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर रोल प्रीवियस ईयर का ही प्रपोज डिविडेंड का है, करंट ईयर का कोई रोल ही नहीं होगा। अगर वो भी तब अगर डायरेक्टर उसको अप्रूव कर देते हैं तब एक बार ऊपर ऐड हो जाएगा शेयर होल्डर के लिए, और फिर नीचे से पे किया जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। दूसरी बात, ग्रेवाल साहब की एक लाइन बड़ी अच्छी की तारीफ करूंगा इस चीज के लिए कि ये पक्का है कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जा रहा है, भले एक क्वेश्चन उस बात के ऊपर साइलेंट हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो पे करना ही होगा, वो तो उनका अधिकार है। लेकिन अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को ऊपर पे करती है तो ये जरूरी नहीं कि फिर वो इक्विटी शेयर्स को ऊपर पे करे। और प्रपोज डिविडेंड की एक बड़ी अजीब विडंबना है। वो विडंबना क्या है कि ये पहले प्रपोज होता है, बाद में पेड होता है। अप्रोप्रिएशन उसका पहले होता है, बाद में हम पे कर देते हैं। लेकिन एक इंटरिम डिविडेंड भी है सर, बिल्कुल है। उसके लिए एक अजीब बात है, ये ऐसा डिविडेंड है, विनोद विजय बड़े ध्यान से सुनते हैं, उनके लिए खास बोल रहा हूं कि ये पहले पे किया जाता है, बाद में इसका अप्रोप्रिएशन होता है। और डिविडेंड किसी भी रूप में होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ही आएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कोई एक ऐसी एक्टिविटी तो बताओ जो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंसिंग और डिविडेंड पेड किया है। और शायद एक क्वेश्चन क्लेम भी ले ना सर। हाँ बिल्कुल, अब बुढ़े के तो साथ कैश फ्लो में टाइम बच जाएगा। ये सर जो आप अभी बता रहे हैं इक्विटी एंड प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में, ये क्वेश्चन काफी आया हुआ है। मिस अकीला, मिस कविता, इससे रिलेटेड सर विनोद विज सर का ही एक क्वेश्चन है कि जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, अगर प्रेफरेंस शेयर्स करंट ईयर में रिडीम हुए हैं या इशू हुए हैं, उसमें जो प्रेफरेंस डिविडेंड हम कैलकुलेट करें वो ओपनिंग बैलेंस पर कैलकुलेट करें या क्लोजिंग बैलेंस पर कैलकुलेट करें। हाँ, इसके बारे में ऐसा लग रहा है। हाँ, इसके अंदर देखिए डिविडेंड अगर तो देखिए इंटेरियम दिया जा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, तो क्लोजिंग का ही बैलेंस दिया जाएगा। जो उस समय के प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, डिविडेंड तो उन्हीं को मिलना है। ओपनिंग के अंदर बीच में साल के दौरान कुछ लोगों ने प्रेफरेंस शेयर खरीदी हो, वो तो फिर उसी को ऊपर क्लेम किया जाएगा। अब मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर आ गया।
अनक्लेम डिविडेंड, विनोद जी ने खास ये मेरे से हमसे पूरे सज्जनों से पूछा गया है, ट्रीटमेंट ऑफ अनक्लेम डिविडेंड इन बोथ केसेस, इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट। तारीफ करी जाएगी सर इस क्वेश्चन की, कैसे अनुभवी लोग हमसे पूछते तो हैं। इसके लिए मेरा एक सुझाव बड़ा सीधा सा है, विनोद जी डिविडेंड पेबल अकाउंट खोल लो, उसमें अनक्लेम डिविडेंड का बैलेंस बाई के अंदर ले जाओ, लाइबिलिटी है, क्लोजिंग इधर रख दो, यहां तक कि पहले जो प्रपोज डिविडेंड हो वो भी उसके अंदर ट्रांसफर कर लो पहले, और फाइनल पेड की जो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, इसमें आपका इंक्रीज का भी जवाब आ जाएगा, इसमें आपका डिक्रीज का भी जवाब आ जाएगा। खाली इंक्रीज और डिक्रीज इसी से नहीं हम बना सकते हैं। तो मेरा ख्याल डिविडेंड के अंदर सारे लेक्चर के अंदर वो ग्रेवाल साहब की मुझे एक बात बहुत तारीफ करेंगे हम लोग भी, और शायद आप भी विनोद जी, ये बात पक्की बांध लेनी चाहिए। एक कंपनी इक्विटी शेयरों के ऊपर अगर डिविडेंड दे रही है, भले वो इंटरिम डिविडेंड है चाहे प्रपोज है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो पे करना ही होगा। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया गया, उनका फिक्स रेट है, उनको अगर पे किया, ये जरूरी नहीं कि फिर इक्विटी को दिया जाए। दोनों का डिविडेंड का भी नेचर का भी अलग है, वो फिक्स परसेंटेज के ऊपर है, उनकी कोई परसेंटेज बोर्ड को डिसाइड करना है। और सर जरा जो बात कह रहे थे कि अनक्लेम डिविडेंड की कि हम अकाउंट बनाकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्चुअली हम लोग ये बात समझें कि अनक्लेम डिविडेंड है क्या। Unclaimed dividend is that part of dividend which was declared but not paid to shareholders because of some reason. और ये कंपनीज एक्ट का रूल है कि जो डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया that must be paid within 30 days of its declaration. अगर किसी वजह से वो पे नहीं किया गया, कि यानी शेयर होल्डर्स के जो वेयर अबाउट्स हैं उनके बारे में नहीं पता, या कोई और रीजन है जिसकी वजह से कुछ शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड पे नहीं किया गया, तो कंपनी उतना डिविडेंड जो पे नहीं किया गया उसको ट्रांसफर कर देती है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में या अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में। और उसके अलावा कंपनी ये जो अनक्लेम्ड डिविडेंड है 2 इयर्स तक अपने बिजनेस में मेंटेन करके रखती है, और उस डिविडेंड को शेयर होल्डर क्लेम कर लेता है तो उसको वो अमाउंट पे कर दिया जाता है। अगर 2 इयर्स के अंदर वो क्लेम नहीं करता है तो ये अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में, ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो ये बात हमने समझनी है कि एक्चुअली क्या है, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेकर चलें कि प्रपोज डिविडेंड जो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर का बैलेंस 2 लाख है, करंट ईयर का बैलेंस 3 लाख है, तो जो डिविडेंड प्रीवियस ईयर का है उसको कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में प्रपोज किया गया और उसको डिक्लेयर किया गया, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल मिलने के बाद उसको डिक्लेयर किया गया। अब ये बात अगर हम देखें कि 2 लाख अगर डिविडेंड था विच वाज डिक्लेयर्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग, और लेकिन इसमें से जो अमाउंट पे किया गया वो सपोज 1,70,000 पे किया गया, 30,000 पे नहीं किया गया, उस केस में जो 30,000 है वो ट्रांसफर हो गया अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में। ये अनक्लेम्ड डिविडेंड बैलेंस शीट में अपीयर हो जाएगा एज पार्ट ऑफ अदर करंट लायबिलिटीज। अब यहां पर ये सिचुएशन है, अगर हम इस सिचुएशन को इस तरीके से देखें कि हमारे पास वही चीज गिवन है कि 2 लाख प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का है, 3 लाख करंट ईयर का है, और बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर का बैलेंस हम मान के चलते हैं कि 0 है, निल है, लेकिन करंट ईयर का बैलेंस 30,000 है। तो इसका मतलब है डिविडेंड डिक्लेयर्ड ₹2 lakh will be added while calculating net profit before tax, but when the amount will be shown as financing activity, actual amount paid will be shown as dividend paid, and that will be ₹1,70,000. अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी था साथ में कि अगर बैलेंस शीट में अनक्लेम्ड डिविडेंड इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब यह है कि अगर वो डिक्रीज हुआ है, दैट मच ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, अनक्लेम्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। यानी इसका मतलब है कि जो 2 लाख एडजस्टमेंट में गिवन है प्रोविजन प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, वो भी हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शो करना है, और जितना अनक्लेम्ड डिविडेंड डिक्रीज हुआ
उसको भी हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शो करना है, यानी दोनों अमाउंट हम ऐड करके शो कर सकते हैं। ग्रेवाल सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? एक बीच में अगर एक कहें तो एक छोटी सी फुलझड़ी छोड़ दूं, हाँ जी सर, अगर आपकी इजाजत हो तो सर। हालांकि प्रपोज डिविडेंड अगर अप्रूव हो गया, इंटरियम डिविडेंड पे तो कोई समस्या ही नहीं है। जिस समय हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं, ऊपर एडजस्ट किया जाता है, सभी लोग जानते हैं। अब मेरे विनोद जी, आपके लिए तो खास कह रहा हूं, लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति होगी जबकि ये ऊपर एड बैक तो नहीं किया जाएगा, लेकिन नीचे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में छूट किया जाएगा। एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ऊपर तो वो एड बैक नहीं हो रहा, लेकिन नीचे पेड हो रहा है। विनोद जी, आपने तो खास बड़ा अच्छे तरह पढ़ते हैं, मुझे पता, अच्छे टीचरों में हैं। और वो सिचुएशन है सर, अगर डिविडेंड जनरल रिजर्व के थ्रू पे की जाती तो फिर वो डिविडेंड ऊपर तो ना होता। यही फुलझड़ी है, ये याद रखना। बड़ा सिंपल सी बात है। आप उसी चीज को एडजस्ट करोगे इन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम व्हिच हैज गॉन इनटू डिटरमिनेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट। बस सोने पे सुहागा, ये तो सोने पे सुहागा हो गया, वही करे। ये I'll take one query of Miss Akila Ramakrishnan, which is related to dividend. Yes. What is the treatment or if the interim dividend was paid on equity shares? Is it necessary to show payment of preference dividend? I'm sure, Miss Akila, you must have this point was discussed, and I'll repeat that yes, if interim dividend has been paid on equity shares, then dividend on preference shares has to be paid. So few short questions also are there by Ms. Harman. She's asking whether declaration of dividend, final and interim, will have an outflow or it will not have any flow. Declaration. She has mentioned declaration of final dividend and declaration of interim dividend. Gaurav sir, will you please take that up? Yes, sure, ma'am, sure. The point is very simple. Declaration is done in the year subsequent to when it was proposed. So once it is declared, will have to be paid within 30 days. Once it is declared or it is finalized in the AGM, it has to be paid within 30 days. Yes, it will be considered as an outflow. Am I right, Grewal sir? Yes, sir. बिल्कुल. ठीक है, so thank you. So next question भी आपके लिए ही है. What is the treatment of premium on redemption of debentures or preference shares in cash flow statement? And I am connecting it with another related question which we have received a lot. While preparing cash flow statement, if debentures were issued at discount and discount has been written off out of securities premium / capital reserve. Right, sir? Yes, sir. This question on premium on redemption of debentures has been asked by Mr. Vej, Ms. Rashmi, Mr. Ashok, and many other teachers. So please, can you take that up? Thank you. Sure. Dear friends, there are two aspects. There are two ways of thinking about this query. First is whether that premium on redemption of debentures or preference shares has been decided in advance by the company at the time of issue. This is the first aspect. And second is, it was not decided at the time of issue, but the company is deciding only in the year of redemption. So there are two ways. In the first way, we will understand both the ways. We will discuss both the ways. In the first way, when it was decided in advance at the time of issue, it means the company must have opened two accounts, loss on issue of debentures and credited by premium redemption of debentures. That loss on issue of debentures would have been written off in the year of issue itself, out of SPR, capital reserve, and if not, then by statement of P&L. But the balance of premium on redemption of debentures will be existing in the balance sheet as a part of other non-current liabilities. In the year of redemption, or just 1 year back, just 1 year before the redemption, this will become a part of your other current liabilities. When the debentures will be redeemed at premium,
this premium or redemption balance, which was decided in advance, would also be decreasing, would also be showing a declining amount. Suppose 80,000 to 60,000. It means that debentures were redeemed at premium. So in the year of redemption, there's an outflow of debentures face value amount and premium redemption debenture account. But since it was a part of balance sheet, it will have only one single effect, that is outflow in the financing activities. This is the first part. When the premium on redemption was decided in advance by the company at the time of issue itself. Situation number 2, when the premium on redemption of debentures or preference shares was not decided in advance. It means when the debentures were issued, it was not finalized, it was not decided that these debentures, these preference shares will be redeemed at premium. Now, in the year of redemption, if the company has decided that debentures of rupees 2 lakh will be redeemed at 10% premium, it means 2 lakh is the face value to be repaid, and out of, you can say, good wishes, the company is paying 20,000 extra to the debenture holders as a part of premium on redemption. Now, this premium redemption was not a part of balance sheet because it was not decided in advance. This will have two effects. First, this premium redemption debenture amount will be added to statement of P&L, that is, will be added to profits as a part of non-cash and non-operating expenses. Just because of this premium redemption will be written off out of the statement of P&L only. And there will be an outflow of 2,20,000, that is 2 lakh of the face value, and 20,000 is the premium on redemption of debenture. So 2,20,000 will be outflow in the financing activity. Now the second part of the query. The second part was, if the discount or loss on issue of debentures was written off out of security premium reserve or capital reserve, then my dear friends, if the discount or loss has been written off out of the securities premium reserve, then SPR would be showing a downward trend. The balance of SPR must be decreasing for sure. Suppose the debentures of rupees 5 lakh were issued at 10% discount, and this discount was written off out of SPR. Then the 50,000 discount balance was written off out of SPR. So there will be a decreasing amount of SPR of rupees 50,000. So what we have to do is, we don't have to do any treatment of SPR. We don't have to do any treatment of discount on issue of debentures written off. We just have to show the issue of debenture amount by rupees 4,50,000. That is a net amount received by issue of debentures. Am I right, Grewal sir, Kosta sir, Ravinder sir? Thank you, sir. So next, we move on to the next one. So Harvinder sir, request you to take this up. Mr. Ashok, margin ka hai. Oh yes. I think In continuation. yes. Yes, this has been asked by Mr. Ashok Mahajan. So in cash flow statement, in the absence of information regarding issue or redemption of debentures, what should be considered for calculating interest on debentures? So Gaurav sir, can you continue your... Yes, sure. Mr. Ashok sir, as per the common perception, the common acceptance, we always take it as whatever issue of debentures or whatever redemption of debenture has taken place at the end of the year. So we always try to give the interest amount on the opening balance. But I'm not saying it's a rule. There is no hidden rule. There is no hard and fast rule written anywhere about this way. So on a safer side, we can ask our students to give a footnote that whether they have assumed that debentures were issued at the beginning of the year or at the end of the year. But the common acceptance, or you can say what we are doing in a classroom situation, we always take it as the interest will be given on the opening balance unless otherwise mentioned. This is very important because sometimes the students might ignore the additional information where it is clearly mentioned debentures were issued on 1st July, debentures were redeemed on 1st, 30th June, or any other way such way. So just ask our students to read the instructions carefully. Otherwise, to be on the safer side, give a footnote or else give the interest on the opening balance. एक बात और कहूँ, अगर कोई लोन है या बोरोइंग है, ऐसा भी होता है कई बार कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, तो फिर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने की भी कोई जरूरत नहीं है, खत्म है ही नहीं,
तो फिर करेगा ही कैसे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं Right. Thank you, sir. So next question is about treatment of provision for doubtful debts in cash flow statement. This has been asked by Mr. Vinod Ved. So, खोसला sir? विनोद जी ने पूछा हाँ है। जी, हाँ फिर तो खोसला जी आंसर करेंगे ठीक। विनोद जी, आपने भी ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं जिसकी तारीफ की जाएगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अगर तो ये आपका इंक्रीज हो रहा है तो इसे आप ऐड कर दीजिए, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसे माइनस कर दीजिए व्हाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बहुत सीधा सा इसका कोई आंसर As non-cash expense. एज नॉन कैश। दूसरा तरीका भी जो है, अगर आप डेटर्स को नेट ले रहे हो, डेटर्स को नेट लेके नहीं अगर करो- डेटर्स को नेट ही ले रहे हो ना, नेट ऑफ प्रोविजन ले रहे हो आप, हम्म। तब आप वर्किंग कैपिटल चेंज के अंदर एडजस्ट उसको एडजस्ट करते हैं। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है. So next question has been also asked by many of our teacher colleagues, Mr. Vij, Ms. Akila, Mr. Mukesh Kumar. This is asking about treatment of underwriting commission / preliminary expenses in cash flow statement. So Grewal sir. हाँ हाँ sure thank you for giving me the chance. एक चीज सबसे पहले we must keep it in mind, the preliminary expenses on underwriting commission, they are written off in the year they are incurred. Underwriting commission can be written off from securities premium reserve. If security premium reserve does not exist, it can be written off from statement of profit and loss. But your question is how to treat underwriting commission and preliminary expenses. Now, if underwriting commission and preliminary expenses, as our co-panelist Ms. Gaurav has explained just now, अगर ये write off हुए हैं from statement of from securities premium reserve, that means they have not gone into statement of profit and loss to determine net profit for the year. और जब ये net profit determine करने के लिए नहीं use हुआ, इसका मतलब हम net जब cash flow from operating activities में net profit before tax and extraordinary items work out कर रहे हैं, उसमें कोई adjustment नहीं करेंगे. और ये पे तो हुआ है, तो ये आइटम क्या ये ऑपरेटिंग में दिखाएंगे या इन्वेस्टिंग में और या फिर फाइनेंसिंग में. अंडरराइटिंग कमीशन किससे कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड विद इशू ऑफ सिक्योरिटीज, दैट मींस शेयर्स और डिबेंचर्स. तो जो पे हुआ है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया, वहां पर हम इसको आउटफ्लो दिखाएंगे. पर क्योंकि ये नेट प्रॉफिट डिटर्मिनेशन में नहीं यूज हुआ, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. सेकेंड चीज आ गई आपकी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को लेके बहुत ही क्वेश्चंस उठे थे और पूरी टीम ने एक ब्लॉग भी बनाया इसके ऊपर, which I think is a very well explained document. It covers all the situations. तो आप वो मेरे ब्लॉग के अंडर पब्लिश हुआ, लिखा हम सभी ने, तो उस ब्लॉग में उसको पढ़िएगा, बहुत सारी चीज क्लियर होगी. मैं आपको फिर एक बार कहूंगा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम डिटरमिन करते हैं, तो हम उन्हीं आइटम्स को कवर करेंगे, कंसीडर करेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस में गई हैं, यानी कि नेट प्रॉफिट डिटर्मिनेशन में यूज हुई हैं, अदरवाइज नहीं. तो अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ हुए हैं, इसका मतलब कि वो प्रॉफिट एंड लॉस को उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, पर पे तो हुआ. अगर पे हुआ है तो ये क्या ऑपरेटिंग है या फाइनेंसिंग है या इन्वेस्टिंग है? तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है.
क्योंकि डेफिनेशन अगर देखें, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज and those activities which are not investing or financing activity. और preliminary expenses ना तो investing activity है और ना ही financing activity, इसलिए ये operating activity है. और operating activity में भी आके तो क्या ये normal operating activity है या item है या extraordinary item है? It is an extraordinary item. So cash flow from operating activity may towards the end, we will show outflow on account of preliminary expenses. पर अगर ये write off हुए हैं from statement of profit and loss, तो पहले साल में write off होने उसी साल में pay भी हो गए, तब हम इसको net profit before tax and extraordinary item में हम add करेंगे. Say 1,000 rupees और same amount 1,000 rupees हम show करेंगे as outflow under extraordinary item in cash flow from operating activity. तो बड़ा clear है कि underwriting commission है, written off from statement from written off from securities premium reserve, तो net profit before tax and extraordinary item में add नहीं करेंगे. इसको पे हो गया, it will be shown as outflow under financing activity. और preliminary expenses हैं, if it is written off from statement from securities premium reserve, तब भी same treatment, उसमें हम add नहीं करेंगे, पर इसको कहाँ show करेंगे? As extraordinary item under operating activity. और अगर write off हुआ है from statement of profit and loss, तो हम एक बार add करेंगे in the net profit before tax and extraordinary item, क्योंकि extraordinary item है इसलिए add करेंगे. नीचे इसकी operating activities में towards the end we will show it as outflow as an extraordinary item. So I hope this becomes clear. Unless, In relation to extraordinary items only, we've received few questions as to whether extraordinary items are a part of syllabus or not, and if yes, then what items should be covered, what may be covered for the purpose of the exam, has been again asked by Mr. Vej, Ms. Komal, and other teachers as well. So in that flow, we can answer this one. Yes, sure. Thank you, Mr. Vej. अभी तक तो खोसला जी आंसर करते आए थे आपकी क्वेरीज, तो मैं ये साढ़े दोनों दा खास नदी ये ना दिया करो जी. Can you extraordinary items? Extraordinary items. Extraordinary items, they are very much part of the syllabus. पूछी जा सकती हैं, ये अलग बात है कि आज तक नहीं पूछी गई. But yes, it can be asked. अब कौन सी आइटम है जो extraordinary item? We can take examples. Under cash flow from operating activities, अभी हमने डिस्कस किया preliminary expenses. तो ये extraordinary item है. What are extraordinary items? Which are items which do not happen in the regular life of the business. They happen only occasionally. So preliminary expenses कभी कभार होंगे. तो ये extraordinary item होगी, but क्योंकि definition से जाएं तो it is an operating activity. आपके investing activity के अंदर उसका एग्जाम्पल लें तो कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला क्योंकि वो नेचुरल कैलेमिटी हो गई या कोई एक्सीडेंट हो गया, इट विल नॉट हैपन एवरी टाइम. इट हैपन ओनली वंस और ट्वाइस इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हो गई जो इंश्योरेंस क्लेम से पैसा आया. और अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो buyback of own shares, buyback also does not happen every time. तो वैसे ही लॉ में रिस्ट्रिक्शन है कि आपके रिजर्व्स इतने होने चाहिए, इतने साल में एक बार कर सकते हो आप, तो it will not happen on regular basis. So buyback of own shares is also an extraordinary item. और अब ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और कितना पूछा जा सकता है ये तो हम नहीं कह सकते.
क्योंकि ये तो पेपर सेटर वो ही डिसाइड करेगा कि हमें क्या पूछना है, और आज तक तो पूछा नहीं गया एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम के बारे में। सो व्हाट आई फील, हमें क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स हैं, कौन सी नहीं है, ये जरूर हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे। जब कभी आएगा एग्जाम में तो हम बता भी देंगे विनोद जी आपको तो विशेष रूप से। और एक चीज यहाँ पर मैं थोड़ा सा शायद बीच में रह गई वो ये बात कि जब हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, तो इसमें एक चीज हम ले सकते हैं, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फ्रॉम लॉस ऑफ गुड्स, तो उसको तो हम ऑपरेटिंग में शो करेंगे। लेकिन अगर किसी फिक्स्ड एसेट का लॉस हुआ है उसके अगेंस्ट अगर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ, दैट विल बी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमें ये देखना है कि नेचर क्या है। अगर नेचर कवर हो रहा है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो वहां की एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम हो गई, अगर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो गई। So we quickly move on to the next questions. We will Harvinder have sir. to speed up. Yes, so we'll are running short of time now. Harvinder sir, how to treat gain on sale of fixed assets, which is transferred to capital reserve while preparing cash flow statement? General treatment of gain on sale of investment, or you can say that is fixed asset. Generally, we transfer this amount to statement of P&L as non-operating income. Or when cash flow statement is prepared, this amount is subtracted as non-operating income. And this amount is along with the amount of book value of assets sold is shown as cash inflow from investing activities. यानी इसका मतलब है कि in case if asset of the book value rupees 20,000 sold for rupees 25,000, so sale amount will be shown in investing activities rupees 25,000. But if gain on sale of fixed asset has been transferred to capital reserve, so that means that was not transferred to statement of P&L. So not to be subtracted as non-operating income because that was not transferred to statement of P&L. And definitely capital reserve will be appearing in the balance sheet, liability side under the head reserves and surplus. तो उसका ट्रीटमेंट जो अपने आप उसमें कैंसिल हो जाएगा। तो दैट मीन्स सिर्फ ये फर्क होगा कि आपको नजर आएगा कि कैपिटल रिजर्व will appear as a liability in the balance sheet under reserve and surplus. So this much of amount is not to be subtracted while calculating cash flow from operating activities. But sale का amount हम normal way में show करेंगे, तो उसके according ये treatment करनी। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर गेन और लॉस ऑन सेल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करती है तो हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करते टाइम उसको एडजस्ट करना है क्योंकि उसने हिट किया है। गेन आपका माइनस होगा, लॉसेस ऐड कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर वो गेन और लॉस डायरेक्टली ट्रांसफर ही हो गए कैपिटल रिजर्व के अंदर तो इसका अर्थ है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को तो अफेक्ट किया ही नहीं उसे, और लिहाजा उस केस के अंदर उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं करने की जरूरत है। वो बैलेंस शीट के मुखड़े के ऊपर तो दिखाई दे रहा है जो ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सॉरी है, लेकिन उसकी कोई ट्रीटमेंट अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान दें, जो वैल्यू सेल की है वो एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जरूर शो। Thank you, sir. So Gaurav sir, the next two questions I will ask you. दो treatments discuss करने हैं हमने cash flow statement में। एक तो trade payables which are given under other non-current liabilities and दूसरा short-term loans and advances. Short-term loans and advances. Okay. First is treatment of trade payables under other non-current liabilities. Right. My opinion is it is still a part of your operating activities. It is neither investing nor financing, so it becomes a part of your operating. Moreover, if we remember the operating inflow and outflow, there are two operating outflow mainly: cash purchase of goods and payment to trade payables. So trade payables is a part of your operating because we have purchased goods from them on credit. It's just by way of, you can say, the common contract between the two parties that the amount is paid beyond the operating cycle or beyond the 12 months.
and that's why it becomes a part of your other current liabilities, but it should be a part of operating only. Second part is, the second query is the treatment of short-term loans and advances. Short- My opinion, it is investing activity. If it is increasing, it is investing outflow. If it is decreasing, it is investing inflow. This question came in CBSE once, if I'm not wrong. That time also, first aspect given by CBSE was it should be a part of investing. Though later on CBSE also gave the other option that if any student has taken it as current assets and treated it as a part of working capital changes in the operating, can also be marked correct. But logically, if we go by the definition, it should be a part of your investing activities. Absolutely. Am I right, sir? Absolutely right. Can I add to the something to the first question Yes, please, sir. about other non-current liabilities? You are absolutely right when you say that they are part of the operating activity, because they are neither investing nor financing. आम तौर पर हम लोग कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं कि बैलेंस शीट में कैसा डिपिक्शन है. Yes. ये अदर नॉन करंट लायबिलिटी है, बैलेंस शीट की डिपिक्शन विच इज एज पर शेड्यूल 3, पर हम बनाने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से, यानी कि हर ट्रांजैक्शंस को आप वो देखेंगे वेदर दे आर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, एंड अकॉर्डिंगली दे विल बी शोन. सो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बैलेंस शीट में अदर करंट लायबिलिटी है या करंट लायबिलिटी है. तो हमें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, तो हमें हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना चाहिए उस समय. Same thing goes for the bank overdraft and cash credit. Though it is a part of the current liabilities, but it is to be treated as financing activity. Financing, yes, that's another example. एक मैं एग्जाम्पल यहाँ थोड़ी एक चीज और ऐड कर रहा हूँ. हाँ जी, sir, please. यानी यहाँ फिर वो कंसेप्ट फॉलो किया जाएगा. इंक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटी शुड बी एडेड, डिक्रीज शुड बी माइनस. मेरा क्वेश्चन अभी गौरव जी से है. गौरव जी, हम आपस में क्वेश्चन ले रहे हैं. हाँ जी, हाँ जी, sir. If there is an increase in other non-current trade payable, increase, so it should be added back. Yes. And decrease should be deducted. Subtract. Yes. If liability is paid, same treatment like the current liability. Yes. Yes. Yes, sir. Thank you, sir. So there is one more question by Mr. Vij. This asks about treatment of charging excess depreciation in past years. He mentions that it has been asked by CBSE in a very old question paper. So some clarity may be thrown on this treatment of charging excess depreciation in past years. So will you take this up? I have to answer? Yes. Sure. So all these salvos fired by Mr. Vinod Vij are directed on to Mr. Khosla and me. बाद में मैं भी कुछ बोल दूंगा. ऐसा नहीं यार. ये दोनों के उत्तर. So, अच्छा, Vinod ji, your question is treatment of charging excess depreciation in the past years. I understand excess depreciation पिछले सालों में charge हो गया. Now it has been reversed. तो पिछले सालों में जब हमने वर्कआउट किया, it was a non-cash expenditure in the cash flow statement. So it was added as non-cash expenditure. Now it has been written back. Written back होगा तो credit होगा to statement of profit and loss as other income. But it is again non-cash. So अगर non-cash expenditure को हम add कर रहे हैं, तो non-cash income को हम deduct कर देंगे. That should be the treatment of this in cash flow statement. बिल्कुल ठीक है सर. बात ही खत्म हो गई. बिल्कुल सर. क्योंकि वैसे तो जो एक्सेस डेप्रिसिएशन है, इसका अर्थ तो ये है कि कंपनी ने प्रूडेंस प्रिंसिपल को बड़ी गहराई के साथ फॉलो किया है. जरूरत से आला सतर्क हो गई है. ठीक है. This is a case of secret reserve. सीक्रेट रिजर्व का तरीका है, एक्सेस डेप्रिसिएशन है. तो बिल्कुल ठीक है कि पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट हुआ है, अब इसको वापस कर रहे हैं इनकम है, तो इसको वहां पर एडजस्ट We have a few minutes, 5 minutes or so. We'll quickly take up the queries
that we've received in chat. Jo bhi nahi हाँ, thi, हाँ, we'll sure, just sure, please. quickly run through them. Some might be repetitive, so we can quickly answer them. So this has been asked by Ms. Rajni. Good evening, sir. What is the accounting treatment for gain on sale of marketable securities in cash flow statement? So Harvinder sir, can you please quickly take that up? No problem. Actually, Rajni ma'am, good evening. First of all, I tell you that any movement in between items of cash and cash equivalent is considered to be no flow of cash, whether marketable securities sold for on at loss or gain. In both the cases, that is not to be shown anywhere in the cash flow statement. They will be part of cash and cash. Part of equivalent. cash and cash equivalent. Yes. The next question is, could you please in cash flow show a provision for tax account where refund of tax is possible, and when is tax refunded? I'm not really able to. I'll Actually- repeat again. Mhm. Could you please explain in cash flow show a provision for tax account where refund of tax is possible, and when is tax refunded? So I believe they're trying to say when tax is refunded. No, I think the question is that there is a provision Provision for also हाँ, and there is refund a of tax. refund of tax Refund also. हाँ, इसका बहुत सीधा सा है जी कि जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है वो आप ऐड बैक करते हैं ऊपर while calculating net profit before tax. अगर रिफंड है तो it should be minus, but while last step tax paid should be net of tax, यानी after refund of tax. इसका सिंपल अगर मैं थोड़ा सा और इसमें एक्सप्लेन करूं आपको कि what you have to do is refund of tax is not to be shown in provision for tax. Simply you calculate the amount of tax provided and tax paid without, first of all, without considering refund of tax. But when you show these amounts in cash flow statement, take net amount, net tax provided and net tax paid. So that means after deduction of refund of tax, net amount to be treated in, first of all, while calculating net profit before tax, and then while showing the amount of tax paid, take net amount, net of refund, and then net result is to be shown as cash tax paid. Right. यानी cash generated from operating equity less tax paid, that is net. So next question, maybe Gaurav sir, maybe you can take. If a company, this is in relation to collateral, if a company fails to meet its liability towards meeting bank loan taken against a primary security, and debentures are used as collateral, and the lendee invoked his right vested in the collateral, what would be the treatment? Can you please repeat the query, the last portion? Sure. If a company fails to meet its liability towards meeting bank loan That was NCLT. taken against a primary security, and debentures are used as collateral, and the lendee invoked his right vested in the collateral, what would be the treatment? This has been asked by Ms. Harman Kaur. Harman ma'am, if the debentures which were issued as collateral against the loan taken, the very simple point is if the company fails to meet the obligations towards the loan, the lender or the bank from whom the loan has been taken will step into the shoes of debenture holders, and they will claim the interest on debentures. Number one. Number two, they will get all the rights which the debentures will receive, debenture holders will have received, and we have to pass a reverse entry. Earlier it was debenture suspense account debit to debenture. Now this account debenture suspense will be closed. Now the entry will be bank loan will be closed. So we have to pass the reverse entry for all the treatments done earlier. But the simple logic is debentures, or you can say the lenders, the bank, the person or the party from whom the loan has been taken will step into the shoes of the debenture holder. They will claim all the rights which the company has to give towards the debentures. And yes, sir. I would add this point also. At the time of when lendee
or borrower that invokes the rights vested in debentures, the journal entry recorded at that time is bank loan account debit, outstanding interest on loan account debit, and then debentures account credit. So this debentures will be credited as a actual liability. So that means on which in future interest will also be paid. Thank you, sir. Or we can pass one simple entry. Outstanding loan account debit, outstanding. Debenture suspense. Debenture Two suspense. Or even Debenture or Because ultimately we have to close debenture suspense account. yes. So debentures account रह जाएगा, that will be the liability. Yes. Another question which has been asked by many teacher colleagues is how do we treat capital gains tax? capital gains tax. Yes. ये तो विनोद विज जी का भी हाँ question जी. है. Yes. And Mr. Diksha has also asked. देखिए, capital gains tax, if I may I answer? Yes, please. Absolutely. If capital gains tax, let us look at it on what kind of transactions capital gains tax arises. It can arise only in the case of sale of assets. They may be in the form of securities, they may be in the form of fixed asset, पर उसके ऊपर profit हुआ, उसके ऊपर capital gains tax लगा, उसके ऊपर capital gains tax is nothing but income tax paid on the capital gain. So it will be shown as an outflow under the investing activity. और अगर ऊपर दिखाया गया है consolidated amount जो हम ऐड कर रहे हैं in the net profit before tax and extraordinary item, तो वहां पर तो हम gross amount ऐड करेंगे. जो capital gains tax होगा वो हम दिखाएंगे as outflow under the investing activity, और balance amount जो होगा वो होगा outflow under the operating activity. सर मैं एक चीज हो रहा हाँ करो सर. ये विनोद विज जी का सवाल है जी. हाँ जी. हाँ जी, सर. सर आपने वो क्वेश्चन पढ़ा होगा जहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का 30,000 है और करंट ईयर का 35,000 है, और उसके नीचे एक एडजस्टमेंट है कि प्रोविजन फॉर टैक्स इंक्लूड द कैपिटल गेन टैक्स ऑफ ₹5,000 या 20,000 जो भी हो. बेस्ट वे इसका ये है कि जो लास्ट ईयर का जो प्रोविजन आपने है वो सर्टेनली हमने पे करना है, तो उस प्रोविजन में से ये टैक्स जो कैपिटल गेन का है माइनस कर दें और आप इसे बाकी अमाउंट जैसा सर ने कहा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर शो कर दें. ठीक है सर. और जितना टैक्स आपने पे किया है वो यानी 5 माइनस करने के बाद 30 में अगर 5 होता तो 25,000 रुपया ऑपरेटिंग के अंदर आता, और जितना आपका प्रोविजन टोटल किया हुआ है वो तो आपने ऐड करना है. So one more short question by Mr. Tushar. Sir, why is current investment not treated as outflow as cash goes out of the firm as it is invested? Simple question. Actually, I give that answer. Because according to CBSE curriculum, if you read very carefully, it has been clearly mentioned that in the absence of any specific information, current investments are to be taken as marketable securities. That's why this amount is to be treated as part of cash equivalent. I'm adding one more point. As you know, according to definition of cash equivalents are short-term, highly liquid investment that are readily convertible into known amount of cash with an insignificant risk of change in value. If it is specified that current investments are in equity shares, or it has been clearly given there is risk of change in value of current investment, only in that case current investments are not to be considered as part of cash equivalent. In that case, current investment will be shown in cash flow from investing activities. But that has been clearly mentioned in the curriculum that current investments are to be taken as marketable securities, so to be taken as part of cash equivalent. Thank you, sir. So with this, we would close this webinar. Apologies if some queries have not been taken up. You can email it to us. And now, subsequently, we will be taking up webinars for students chapter wise, like we did in term 1.
So we will shortly announce on what date we will be taking which chapter. So stay tuned for that. And yes, sir, sure. मैं एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा टॉपिक है कि जिसकी एडजस्टमेंट जो है हम बहुत डिस्कस करते हैं, एंडलेस डिस्कशन जाती है और अभी भी मुझे लगता है कि काफी क्वेरीज हैं जो कि रह गई होंगी। मैं यहाँ पर रेफरेंस लूंगा, जो एक चीज मेरे साथ दिव्या कौशिक हैं बाल भवन मयूर विहार की, उन्होंने मेरे साथ शेयर की, जो मैं आपके साथ सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक अकाउंटिंग की, जब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक है और उससे रिलेटेड एक अकाउंटिंग मीम है जो मैं आपके साथ शेयर करूं, कि जब एक टीचर क्लास में बच्चों को ये स्टूडेंट्स को ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है और ये आपका सिलेबस है, इसमें 4 एडजस्टमेंट है, लेकिन जैसे जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक आगे बढ़ता है वो 4 के 4 के 20 एडजस्टमेंट कब हो जाती है पता भी नहीं चलता। तो वो अकाउंटिंग मीम है कि जिसमें स्टूडेंट ये कह रहे हैं ये कौन सी एडजस्टमेंट है, ये आती कहां से है। तो ये अकाउंटिंग मीम है कि जिसमें स्टार्ट हम करते हैं कि देयर आर 4 एडजस्टमेंट गिवन इन सिलेबस, लेकिन जब हम डिस्कस करने बैठते हैं तो वो 4 की कब 20 हो जाती हैं पता भी नहीं चलता। और सिंपल से कहने का बात ये है कि हम सिलेबस को जरूर माइंड में रखें, कैश फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक डिस्कस करते वक्त कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज भी कई बार स्टूडेंट्स के लिए हार्मफुल होती है। तो बी लिमिटेड टू द सिलेबस दैट हैज बीन गिवन इन द सीबीएसई। 1 मिनट के लिए मैं कहूँगा, सब अपने टीचर्स जो हमारे साथी हैं जो सुन रहे हैं या जो टीचर हैं, विनोद जी भी, वो भी, बाकी सबको आपको नव वर्ष और माँ के नवरात्रों की हार्दिक शुभकामना। माँ आप पर कृपा करे, आप बहुत आगे बढ़े। जय माँ। Thank you, sir. So that's it. Thank you, Gaurav sir, for joining us. Pleasure always, and pleasure always. So we will close this meeting now. Thank you so much, everyone, for joining. Thank you, all of you. Thank you. Thank you. Very grateful.